Sobi, acha Prafulla, you have written the answer. Brahma Prakash written the answer. What about Avijit? Anupriya, others? How many of you have written? Show your answer, please. Anupriya written. Note दिखाओ, note को focus करो. Focus to your note. Turn on your camera and show me the note whether you have written or not. Now that shows the dedication and discipline as well, because which one is ought to be. You should not show any kind of excuse. Pragya, have you done? See, I have written also. Let me show my answer. I have already written here, you can see. What about Subhadra? Subhadra, कौन है जी? 3 questions. Anita, how many questions you have written? Very good. 3टा ही पहला और चलिए ठीक हो जी. Yes. Okay, fine. Now come to the whiteboard. Now whiteboard is visible to all. Yes, sir. Yes, yes. Thank you. Now I will write answer over here. That means I will not go through the running hand. I will go through what I have written, the key points that should reflect in your answer, not to be in the answer. So that point we will discuss. See, time would be one of the important factor and the constraint as well, because you will be also given there some stipulated time, and if you calculate, like UPSC is going to change the pattern like UPSC. In UPSC, when we write the question, we get only 6 to 7 minutes. That is maximum. Okay, so that is the time limits for you. So time limits to 3 hours मिलिबो, but जति आमे ताको divide करिबा, that would be 6 to 7 minutes per head. Now the first question thila कि what are the reason for the depreciation of rupee and impact. Now let me what I have written. So question thila कि depreciation of rupee. Depreciation of rupee. So depreciation of rupee रे से कोई चीज region है ना. That means what are the region and impact. So 3 keywords मते मिलेला इठु जति मु देखिबी. So in your answer, depreciation रो definition, region कोन, impact कोन. So this would be the 3 keyword of your question, and also your answer should be hover, or it should be what I would say the surrounding these 3 particular words. Impact कोन, depreciation कोन, region कोन तारो. तो से रूपी कथा कहिछि. जदि हम देखबे depreciation रो meaning कोन, that means decreasing the value of the rupee. And the value of the rupee is decreasing. That means rupee would not be more competitive enough. And simple जदि हमें depreciation कहबा, rupee रो value टा कोन होछि, the value of rupee is decreasing. Value of rupee is decreasing. Depreciating means value is decreasing. So that would be the definition. Now why? Now region, what is the region? Region kono. The reason is that the Fed, Federal Bank, to samste janiche, Fed is or has raised the
इंटरेस्ट रेट फेडरल रिजर्व अच्छी तुम यूएस रो जो बैंक होइछि फेडरल बैंक से कौन कले इंटरेस्ट रेट को हाइक करदेले जेतरो इंटरेस्ट रेट को हाइक करूचंती दैट मीन्स दैट इज वन ऑफ द रीजन कि इंडिया रे रुपीटा डेप्रिशिएट करिवार वन ऑफ द रीजन why because demand for dollar जदि हम demand for dollar will increase in the world market rather than rupee so as the everyone will now changing I would say what the dollar तो डॉलर को जेतरो समस्ते चेंज करूचंती डॉलर रो वैल्यू टा इंक्रीज करि जिवो एंड रुपी रो वैल्यू टा डिक्रीज करि जिवो सो दिस इज वन ऑफ द रीजन तो रीजन रो फर्स्ट लिखबो कि जो फेडरल बैंक अछि है ना से कोन करछि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाई दिछि दैट इज वन ऑफ द रीजन that rupee is depreciating okay then that one is the key region I would say now next is less export the next point is that causes रे देखिबा less export जेतरो कोनोसी देशर एक्सपोर्ट कमी जाए obviously value of that particular currency से जो तमरो करेंसी रहइबो तार वैल्यू कमी कमी जीवो कारण एक्सपोर्ट कमी जाउछ means you are importing more you are what importing more as you are importing more just a minute when that means less export jetra me karuche that means you are importing more when you are importing more that means you are paying more you are what paying more आउ जेतरा में पे करूचे बा आम देश रे जेतरा एक्सपोर्ट कमी जिवो दैट मींस रुपी रो वैल्यू कमीबो व्हाई ना जेतरा आमे अधिक किनुचे ना आमे जेतरा बाहरु किनुचे किछि दैट मींस आमे इंपोर्ट करूचे when we are importing some things we have to pay in form of dollar so that means dollar demand बढ़ुची or dollar is going out from our hand so that is the reason but in terms of export जदि आमे करिबा आमे एक्सपोर्ट करूचे that time people will run after rupee kana tanku rupee darkar to buy the goods and services from the India so that is the reason that when you are your export become less your rupee also depreciates automatically this is my second reason I have mentioned in my answer and the third reason that is the domestic inflation that is what inflation I have added into my point the domestic inflation see this one is the direct answer writing even I never prepared the question मु सकाळ उठी की तुरंत क्वेश्चन बनै की देछि सेत में गोटे दिरा मिस्टेक भी तुमको देखिया मिलिबो गोटे आंट जगह रे डी जगह रे एस ही जाइछि डेप्रिसिएशन स्पेलिंग गलत ही जाइछि तो पूरा लाइफ रहउछि एटा मु भी आगुर प्रिपेयर होनी कि कोन लिखिबी है ना मु सकाळ उठी के डिसीजन नउछि तुरंत क्वेश्चन को पुट फॉरवर्ड करूछि सो दैट पूरा हमको प्री प्लान किछि न थाउ आ जो माने भाबुछ कि आगुर क्वेश्चन देइ देले भलो हबो आ तुमको ओपीएससी आगुर क्वेश्चन देइ देबो कि जाई तुम जाई कि 2 दिन पर लिखिबो सेट ना कोन है ना तो सेटा मुंडरो हटै दियो कि वी मस्ट हैव क्वेश्चन एट लीस्ट 2 days 1 days है ना वी आर नॉट एबल टू राइट द क्वेश्चन भाई तुमको सेठी भी मिलिबो नै ना दे आर आल्सो इन हैंड यू विल गेट द क्वेश्चन ऑन द टाइम एंड नोबडी नोस व्हाट एग्जैक्टली प्रिंटेड आउट देयर है ना तो इन्फ्लेशन इज अनदर रीजन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन तुम जदि इकोनॉमिक्स पढ़ी तो अदरवाइज जो माने पढ़ी ना अदरवाइज देखि दो YouTube रे है ना कहार भी देखि दे से मोर देखि दे एनीवन एल्स मतलब आई डोंट रेस्ट्रिक्ट यू जहार देखु जो देखो मोर हितर के जने कांसेप्ट मतलब तो इन्फ्लेशन जते डोमेस्टिक मार्केट रे इन्फ्लेशन बढ़िले ऑब्वियसली कोन करि जो एक्सपोर्ट वुड बी लेस as export get less again rupee will depreciate so these are the reason ना हमरो तले दीटा वर्ड को हमें खत्म करले डेफिनेशन डेप्रिसिएशन कोन रीजन कोन नाउ कम्स टू द इंपैक्ट पॉइंट इंपैक्ट भी हम डिस्कस करे पड़े कि रूपी डेप्रिसिएशन कोन पे व्हाट इज डेप्रिसिएशन द रीजन कोन एंड इंपैक्ट कोन नाउ कम्स टू द इंपैक्ट व्हेन रूपी डेप्रिसिएशन होउची दैट मींस हमें कहिबा रूपी तो अप्रिशिएट करूनी डेप्रिशिएट करूची when your rupee is depreciating what will happen first is that your investment would be less so it will have less investment in India that means first point second point is that less export भी कमी जिवो ए भी तमरो less export ही जिवो है ना export कमी जिवो then you are running out of what तमरो जो forex reserve अछि जो forex reserve ए भी तमरो reduce करिवो that also reduce forex reserve भी कोन करिवो reduce करिवो
So these are the implication. These are the implication. Yeah. Then exchange rate कौन हो बढ़ी जीवो exchange rate. Now rupee is what 80, 81, 82 like this. तो ये exchange rate भी बढ़ी गला जोटा पे आम पे खेती है ना. So these are the first question. Please match up your answer. Whether these things reflect in your answer. How many of you are there? Could you please? Yes sir. एतिकी लिखछु सर आ गोटे एक्स्ट्रा माने भी अछि जेतिकी सर इंडिया रो क्रेडिट रेटिंग कमी जीवो क्रेडिट रेटिंग Sir, balance of payment. Yes sir. Foreign travel studies. Foreign travel studies will also be expensive, no? रीजन सब समझते ठीक ठाक लिखी छ रीजन So inflation लिखी थी loan interest rate every loan interest rate certificate. हाँ export भी लिखी थी more export and less more import and less export. Yes sir. Yes. Yes. So I got 2 extra point and thank you guys. One is that BOP. Now balance of payment amar kon ajibo. That means jota mu forex kotha koichi indirectly you can link to this point also forex. Your forex reserve is going to reduce. So obviously na jiti ame dekhiba balance of payment ta kon habo, whether that could be surplus or deficit. Obviously it could be deficit hejibo BOP, or I would say the trade भी deficit hejibo. So that means हमको trade deficit भी हबो, trade deficit भी हेजिबो आपको भी तुम्हें देखि परियो. तो नेक्स्ट आउ गोटे पॉइंट कोन थिला होतलो तमरो एटा ट्रैवल बेकर फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंसिव हेजिबो से गोटे छाड़ दियो मतलब माइनर पॉइंट. आ गोटे पॉइंट कोन थिला भलो गोटे के करथलो सर क्रेडिट रेटिंग कमी जीवो. यस यस फाइन है ना क्रेडिट रेटिंग वेरी गुड. So that means let's say हमें कहबा credit rating जोटा तम जेमती के दिए सब मूडी कथा नहीं जाओ. Let's say I would say मूडी कौन करे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. तो से क्रेडिट हमर कोन हमर जो बॉन्ड्स गुडा अछि सोवरेन बॉन्ड्स कथा मु कहूची. सोवरेन बॉन्ड्स रो जो वैल्यू टा ना कमी जिवो. दैट मींस रेटिंग कमी जिवो. रेटिंग कमी गेले इन्वेस्टमेंट कमी जिवो जोटा कि मु तुमको इम्प्लिकेशन रे कहली. इम्प्लिकेशन रे मु कोन लिखिली कि लेस इन्वेस्टमेंट. I was writing ना I was writing that there would be less investment है ना. That means आमे कहबा जो less investment मु एठी लिखिची export तमरो कमी जाउची forex reduce करूची कोठी ना कोठी ये तमरो लिंक हिकी अछि. तो जेतरो रेटिंग एजेंसी माने रेटिंग कमै दउचंती है ना. सो ये तुमको देखा जो नेक्स्ट क्वेश्चन को आसीबा. सेकंड क्वेश्चन कोन थला फटाफट के कोठी कहि दियो. Sir, India-UK relation in the present scenario. स्पीकर ऑफ कर दियो. इंडिया यूके रिलेशन बहुत बढ़िया. Now I will go through the answer. Answer is that presently I'm देखियो बस you can start off your answer like the present Rishi Sunak become the what new prime minister from the Conservative Party of Britain who is having the root in India and the third generation Indian origin prime minister also called as. And कन्ने तांकर जो parents थे they were belong to the India and third generation even Punjabi and also married to the इंडस्ट्रियलिस्ट कौन तमर नारायण मूर्ति झील को मैरिज कर जी कि वर्तमान इंडियन नारायण जो वाइफ
सी इज इंडियन कहना से इंडियन पासपोर्ट को हेल्ड करूची सी इज हैविंग द इंडियन पासपोर्ट सेतमे से इंडियन तांको वाइफ होची इंडियन एंड दो ही इज नॉट इंडियन तांसे मन करो ऋषि सनाक इज नॉट इंडियन है ना कहना किछि इंडिया रे न्यूज चैनल मानकर बहुत हाइप चलथाय इवन जेतल मु डिबेट रे बसथली जी न्यूज रे तो मते भी क्वेश्चन पचाइतला को सार वेदर मुके अरे एटा देखो मतलब यदि हम देखो सीते तांकर प्राइम मिनिस्टर ना थोड़ी इंडिया पे प्राइम मिनिस्टर बन से तांकर सीते सिटीजन ऑफ यूके से थर्ड जनरेशन इंडियन तारो केति किछि लिंक ही नहीं बुझ पछ नहीं तो सेटा जहां भी पॉलिसी करियो से आगे यूके इंटरेस्ट करिवो ना इंडिया इंटरेस्ट करिवो जब यू एमती बायस्ड आंसर लिखिवो नहीं जहां भी से फॉरेन पॉलिसी करिवो तांकर दैट शुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ यूके पई करिवो इंडिया पई करिवो नहीं हां you can say कि yes we must get certain benefit out of this relation जब हो now एथरे हमें present scenario कोन देखिबा मु जदी देखिबी FTA now हमर जो free trade agreement हबार थिला that ought to be signed on the Diwali the status is not out there in the public domain so I am waiting for the status for the FTA तो हमें चाहू जे free trade agreement हे जो with what with Britain है ना सो जदि हमें देखिबा इंडिया यूके रिलेशन रे को पॉइंट मु लिखि मोर आंसर रे कि एफटीए टा रिफ्लेक्ट होबा दरकार तम आंसर रे कोन रहबा दरकार फॉरेन सॉरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टा रिफ्लेक्ट होबा दरकार देन टोटल ट्रेड वॉल्यूम केते हमर 25.7 बिलियन कोन दैट इज द पाउंड जदि हमें देखिबा दैट इज द ट्रेड वॉल्यूम सो ट्रेड बायलैटरल ट्रेड जदि हम देखबा आकु भी तमे ना ध्यान से मन रखो जेते बेले whenever we are writing any bilateral relation that is the particular question that means the question is particular so you have to mention the economic relation first then comes to the defense and cultural all those factors that is coming to your mind so first economic interest will serve the other interest as well so that is why I'm deliberately putting the what weight behind this particular economic relation as economic relation will solve the other points as well so FTA is one of the concern at the present time I would say we are also optimistic and looking forward for that signing jab yo trade volume ame kahitele for UK India is the second largest FDI source and for India UK also one of the largest FDI source so this is complementary to each other so that could be you can also write in your answer this point then huge Indian diaspora है ना so huge Indian diaspora रही देखो one of the largest diaspora okay नहीं ये भी तुमको देखिए को मिलियो strong diaspora Indian then colonial legacy ये भी कोठी ना कोठी रिफ्लेक्ट करे then Brexit कथा लिखि परियो तमे Brexit and India कहना ब्रेक्जिट रु इंडिया को फायदा मिलिबो बुझ परछन ना द ट्रेड डिस्ट्रप्शन जो न्यू डील हेई पारुनी यूरोपियन यूनियन सहित यूके ना यूके को कही तो गोटे पार्टनर दरकार ना ट्रेड करिया पई सो आई होप के इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो इंडिया शुड गेट लिवरेज आउट ऑफ दैट कंफ्यूजन जो माइंड रे चली चे तांकर एंड द डील जति की हेई पारु नाही है ना सो दैट वुड बी आम कहे से हमको बेनिफिट्स मिल पारिबो इवन यूएनएससी कथा नहीं जाओ यूएनएससी ताकू भी तमे लिंक करबो कि यूएनएससी द परमानेंट मेंबर से हमको हेल्प करूछंदी केबे भी हम विरुद्ध रे कोन इंडिया को सपोर्ट सबले यूएन सपोर्ट करूची सो दीस आर द थिंग्स यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ द इंडिया दैट इज अ यूके रिलेशन रे तमे लिखि परिबो है ना नेक्स्ट अच्छा कोन नाउ दिस थिंग्स आर डन एवरीवन समस्त लिखि जाओ निज आंसर रिफ्लेक्ट करूची whether FTA is featured in your answer yes sir whether you have featured the trade bilateral trade ना सर सेटा करना तो सेटा ऐड कर देलो yes sir diaspora yes sir सर इंडिया इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव भी होगा सर जो मैरीटाइम सिक्योरिटी में let's say you can say मैरीटाइम सेक्टर इंडिया रो किछि काम जाउनी ओके
କରିବନି ସେଇଟା କାରଣ ସେଇଟା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସେଇଥିରେ ନାହିଁ ସେଇଟା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଏଠି କ୍ୟାନ୍ସଲ କରିଦିଅ ओके सर है ना हाँ नेक्स्ट କୁହ ହେଇଯିବ ଏତିକି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ତମ ଆନ୍ସରରେ or anyone is wanted to add some sort of value addition କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କଣ ହେଇଗଲା अरे बाउंस होती ना कौन अच्छा मत put it is okay how many of you are getting confused by getting this kind of question yes sir माने सब गुड़ा पॉइंट सर एट दैट टाइम माइंड को आसुनी yes माने पूरा डाइवर्स ते आसुनी की जना पड़नी कौन लिखियर अछि ଏବେ ତ ଆଡ୍ କର ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡିସନ କଣ ଅଛି ଏଥିରେ एबे ऐड कर है ना क्वेश्चन लेवल ठीक अछि ना ना केमते लागु जे यार यू आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम एंड मनी no question is but ठीक है सर hey नहीं सर ठीक होते सर एटा पैटर्न एमती रहउ से स्टॉप कर दियो मु फटाफट सॉल्यूशन कह दिए ना दिस वुड बी ना देखो तमे जदी एत्ती की भी लिखुछ ना आई एम डैम श्योर यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम मार्क बिकॉज ऑन टाइम रे तमे परे गूगल करके पिला भलो आंसर लिखि दे परिबे घरे बसिक लिखि दे परिबे नो डाउट तुमको लागो यार मु तो लिखिथिल 3-4टा पॉइंट सार सहित आंसर राइटिंग करूथिली बसिकी बट दिस पर्सन इज गेटिंग 10 पॉइंट्स यू विल गेट अ मास टू बट एई भलिया माने इमैच्योरिटी देखैबो नाही बिकॉज दैट पर्सन जे भी लिखि के आनी छि तुमको यूके इंडिया रिलेशन देखौ छि लिखि आनी छि से रियल टाइम रे आंसर लिखि छि की केबे लिखि नाही मु भी तो तुमको रियल टाइम रे जदि न लिखिबी और तुम न लिखिबो तुम भी 10टा पॉइंट आनी मते देखि देबो दैट इज नॉट मैटर इज दैट हाउ मच यू हैव kept in your mind or how much you have learned that would be now utilized in the current time रे तणु करके स्पीकर समस्त ऑफ रखियो है ना तणु करके एई भलिया मतलब टेंशन रे पड़िबो नाही कि सी तार 10टा पॉइंट आनी लिखि देला मु लाइब्रेरी जाईथिली मु बुलिया पे जाईथिली का सहित कथा ही गली तो आम मुंड तार खराब दिन सारा बुलुच पागल है कि यार मु ताहले तो मोर प्रिपरेशन बहुत खराब चलची तार तो बहुत भलो चलची सो दिस काइंड ऑफ इमैच्योरिटी देखे हेबो नाही है ना ताकू कह ठीक अछि भाई तो 10टा पॉइंट बहुत बढ़िया लिखिछु मते त आसु ही नहीं एति कह कि मूव ऑन अदरवाइज से तारा बम पकई देबो तमे से बम धर के बुलुथबो दिन सारा कि यार क्या हो गया मेरा दिन तो खराब हो गया पूरा है ना ऐसे मत करो नाउ कम्स टू द ओपेक वाला क्वेश्चन को हमें देखिबा नाउ ओपेक कोन करिछि ना ऑयल को कट ऑफ कर देछि ये क्वेश्चन थिला कोन लेट मी गो थ्रू द क्वेश्चन वंस एक मिनट just let me check the question put for the reason for the cutting of oil output by the OPEC okay ना प्रथम कथा OPEC रो हेडक्वार्टर होची कोठी तमरो ऑस्ट्रिया है ना ऑस्ट्रिया दैट इज वियना ना जदी हमें देखिबो OPEC रो लेटेस्ट मीटिंग रे से माने कोन कहले ऑयल को कट ऑफ करछि केते 2% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई someone asked me yesterday कि whether sir you are putting the question from the current affair or all the basic question only once you try then experience so because we guys are let it be Lalita let it be Purushottam sir let it be me we guys we have been in this particular field since I will say 2017 2018 like that I am particularly from 2017 in this particular field
and also before that I was also preparing for the UPSC and still. So these things, we are more updated and also more dedicated. So that makes the difference for you, and I believe so. 2% of the global oil जदि हम देखा जोटा हमरो आउटपुट को कट करिसेंती ओपेक, तार रीजन कौन? तो फास्ट हमको देखा था ओपेक इज ए ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्रुप, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग ग्रुप, which had question answer केमती हो, which had latest meeting which was held in the Vienna in their headquarter, and they decided together to cut out or to reduce the output 2% of the total global supply of the oil. This would be the introduction. Now comes to the what एमती ना कि introduction लिखुचो OPEC countries are the these countries, एमती किसी दरकार ही नहीं, कहना तुमको 5 मिनट रे कौन टा लिखिबो, तुम 5 मिनट रे लिखिबो टाइम ही मिलिबन तुमको, बुझ पड़छ नहीं तो बस। तो ये तुम लिख देन एस रीजन कौन, व्हाट आर द रीजन काहे कि माने ऑयल को कट ऑफ कर देले प्रोडक्शन। नाउ व्हाट दे नाउ याको नहीं कि टेंशन हैला कि यूएसए कहला जे देखो ये तो दिस इज अनफेयर कि तुम माने मिसी की ऑयल आउटपुट को कमी दउछ, दैट मींस यू आर सपोर्टिंग रशिया, तुम रशिया को सपोर्ट करूछ, बुझि परछ नहीं, फॉर द वार फंडिंग। तो सऊदी अरेबिया कहले, सऊदी अरेबिया वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग नेशन अमंग द ओपेक, सऊदी। तो सऊदी कहले नहीं रीजन टा किछि अलगा कि मु जो आमे जो रीजन जो थि पई आमे ऑयल आउटपुट कमेचु सेटा होची इंटरेस्ट रेट। ना इंटरेस्ट रेट किए बढ़ाई, फेडरल रिजर्व बढ़ाई से। सेकेंड डिमांड, जदि तुम सऊदी रो लॉजिक देखिबो, सऊदी अरब जो लॉजिक पुट फॉरवर्ड करछंती से कहया कथा कि इंटरनेशनल मार्केट रे इंटरेस्ट अधिक हो जाई, दैट मींस डॉलर कम मिलुची, तो इन्वेस्टमेंट एबे सबु जेमति कि इन्वेस्टर्स माने आसु नाहंते हो, तो कोठी ना कोठी डिमांड फॉर द ऑयल कमी जाईची, तांको कहया कथा ऑयल रो डिमांड कमी जाउची, जेतु डिमांड पे हो जाउची तांकर प्रॉफिट भी कमी जाउची, है ना। ए माने प्रोडक्शन तो करूचंदी बट प्रॉफिट पाउ नाहंती। So that is why they thought कि to remain the benefit or to retain the benefit, जेतिक benefit पाउथला हमको प्रोडक्शन कमी देबा, जदि हमें प्रोडक्शन कमी देबा तल डिमांड जेतिक थिबो दैट मींस मैचिंग हे जबो। भाबो प्रोडक्ट तम डिमांड कमी जाउची, प्रोडक्शन को तमे कांस्टेंट रखिछ और बढ़ाई दउछ, दैट मींस लो प्राइस रे तुमको बेचिबा को पड़िबो ना। जदि तमर डिमांड कमुची और सेम रेट रे तमे प्रोडक्शन भी कमउछ, दैट मींस बैलेंस मेंटेन रहिबो एंड दे आर नॉट लूजिंग मनी। So that is why they have thought to less the production or to cut out the production, है ना। कटिंग हम कहबा प्रोडक्शन को कट कले एथि पई। होप बुझा पड़ी जो एबे डन एवरीवन? यस सर, Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबा इंडिया यूक्रेन रिलेशन। स्पीकर ऑफ करते समझते इंडिया यूक्रेन रिलेशन ना, जेतले बायलैटरल रिलेशन आसीबा इधर यू कैन स्टार्ट डेफिनेशन केमती भी तमे स्टार्ट कर परबो, लाइक इंडिया के बे से देश सहित बायलैटरल रिलेशन एस्टैब्लिश करथला, सो ऑन सो फोर्थ। Now, if you write like that, India was the very fast country and always, in 1992, India was the very fast country in this world who recognized Ukraine as a nation. That means our bilateral relations started in 1992 after the disintegration of USSR. The Soviet Union disintegration jethro 1991 हेगला, तापर तमरो फास्ट सबटु लार्जेस्ट कंट्री ता भितर आसेला USSR के यूक्रेन। ना लार्जेस्ट कंट्री होची यूक्रेन, जहाँ को इंडिया रिकॉग्नाइज कला 1992 एंड आल्सो साइंड ए फ्रेंडशिप ट्रीटी 1992 रे फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करके हमरो ट्रेड कारबार सब स्टार्ट हे गला, बट ट्रेडिंग वाज नॉट दैट मच। तो हमें दैट मींस हमें रिलेशन स्टार्टअप हे जे 1992 रे। आज ऑफ नाउ जे में ट्रेड रिलेशन देखिबा एते खास नहीं, दैट मींस ओनली 2.8 to 3 or 3.5 बिलियन डॉलर ट्रेड, एमती के से खास ट्रेड नहीं, है ना। ट्रेड वैल्यू जति मु देखिबी तो ये होची तमरो केते इंडियन रहउची ऑलमोस्ट 20,000। तुमको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर डेटा देखिबो 18,000 लिखा थिबो, बट ऑलमोस्ट हम कहबा 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स खाली रहउचंती फॉर द मेडिकल, जो माने मेडिकल प्रिपरेशन मेडिकल कने सेठी यूक्रेन रे मेडिकल टा चीफ थाए,
माने एठी लेट से तुमको 1 करोड़ लागु पाठ पढ़िया पे गोटे प्राइवेट मेडिकल रे तो सेठी कम पड़े सेठी पे इंडियन स्टूडेंट्स माने प्रिफर करंती एंड यूक्रेन वार टाइम रे तो जानि थिबा ओ कोन है ना केते स्टूडेंट को माने वापस आनिले एंड दे आर आल्सो डिमांडिंग फॉर द सर्टिफिकेट एंड टू कंटिन्यू द मेडिकल प्रैक्टिस इन इंडिया जोटा कि अलाउ करा जाऊ नाही जा भी हो तो ए सब इंडियन डायस्पोरा कथा जदि मु देखि दैट मींस वी आर हैविंग प्रीटी गुड डायस्पोरा 18 to 20,000 पीपल हमको देखिया को मिलेबे नाउ जदि हमें देखिबा वर्तमान सिनारियो रे टिके देख आउट टिके देखिबा ताली हमर जो ट्रेड होची ट्रेड को एरिया रे ट्रेड होची डिफेंस ट्रेड होची फार्मास्यूटिकल बिकॉज इंडिया होची लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जानचो आ यूक्रेन को हमें बिकुचे डिफेंस प्रोडक्ट हमें यूक्रेन रो आणुचे है ना हमें यूक्रेन को दौने यूक्रेन ठू आणुचे फॉर एग्जांपल R27 ये गोटे मिसाइल R27 गोटे मिसाइल जोटा कि हमें आणुचे यूक्रेन रो आणुचे एटा एयर टू एयर सरफेस टू एयर गोटे मिसाइल टा तो हमें ताको यूक्रेन रो ही आणुचे किबा ड्रोन्स हे गेला ये बहुत बढ़िया बनाते ड्रोन्स डिफेंस पाई ड्रोन्स गुडा तो ताको हमें आणुचे इवन हमें आउ कोन आने पॉलीमर जेते हमें पॉलीमर्स गुडा सेटा बाकी हम डिफेंस एतित जेते बाकी छाड़ दबा एंड तमर अनमेंट एरियल व्हीकल्स गुडा भी आसुचे इवन तमर जो रेलवे रे जो जेते हमर व्हील गुडा माने रेल रो जो व्हील जो चक्क गुडा है ना से गुडा भी हमें सेठु आणुचे तो सेठु हमें इंपोर्ट करूचे तो इंपोर्ट केस रे हम जेते देखिबा आउ कोन आसु यूक्रेन रो ऑयल वेजिटेबल ऑयल तो सेथि पे यूक्रेन वार जो वेजिटेबल ऑयल रो दाम बढ़ी गेला कारण हमर ऑयल सब सेठु से मैक्सिमम वेजिटेबल ऑयल्स रशिया और यूक्रेन रो से तो ये भी हमें ट्रेड रिलेशन रे देखितले है ना देन आउ कोन ना इंडिया होची यूक्रेन पई लार्जेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट कोटी इंडो स्पेसिफिक रीजन रे फॉर यूक्रेन इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर द एक्सपोर्ट ना ही परिवनी है ना इंडो पैसिफिक रीजन रे ताले इंडिया कोन दउची आउ कोन आसुची यूक्रेन रो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यूक्रेन रो आसुची इंडिया दउची कोन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल जहां रहला तमरो मशीन है ना गारमेंट क्लोथ्स वगैरह जहां रहला तमरो फैशन डिजाइन इंडस्ट्री जहां तक इंडिया से गुडा दउची से तांको है ना सो दिस इज द Ukraine and Indo relation. Next and the last one is I2U2. U2. किंतु आमर एठी कोन वेज ऑफ रे I3 and U30. कहले आमर बैच नंबर 30 मैक्सिमम स्टूडेंट आमे हले 3 हला दिस इज ओनली फॉर द फन जब हो I2U2 हमें देखिबा ये तो काफी नुआ कांसेप्ट I2U2 ये गोटे ग्रुपिंग ये गोटे ग्रुप ऑफ कंट्रीज I फॉर इजराइल I फॉर इंडिया U फॉर UAE एंड U फॉर USA तो ये चारटा कंट्री अछि सेते में I2U2 ये कोन आको कहजे वेस्ट एशिया क्वाड बोली कहजे प्रथम कथा तो ये गोटे ग्रुपिंग वेस्ट एशिया ग्रुपिंग तो एथरे कोन हम देखो वेस्ट एशिया क्वाड बिया को कहजे देयर आर 2 क्वाड तो ये भी गोटे क्वाड बोली कहजे ना दैट मींस हमर थिला कोन कि I2U2 एंड इंडिया तले I2U2 रे के रहला तुम कहबा एटा गोटे वेस्ट एशिया क्वाड जो थ्रे कि इंडिया इजराइल USA UAE these are the countries are there ना ऑब्जेक्टिव कोन आर जदि हम कहबा आर ऑब्जेक्टिव कोन आ इंडिया पई कोन दरकार दैट मींस आर ऑब्जेक्टिव भी इंडिया ऑब्जेक्टिव होबा दरकार इंडिया चाहे टू बैलेंस द वेस्ट एशिया पॉलिसी to balance the West Asia policy केमिति फॉर एग्जांपल फॉर USA कथा में देखिबा USA सबले इजराइल को सपोर्ट करे एथरे किछ डाउट नाही इजराइल को सपोर्ट करे जते तुम इजराइल को सपोर्ट करूछ कोठी ना कोठी मुस्लिम सेक्शन एलिनेटेड हेइजबो बा मुस्लिम ग्रुप जो माने अछंती वेस्ट एशिया रे कहबा USA कोन तांको सपोर्ट करूछ हमको सपोर्ट करूनी ना USA देखला गोटे बैलेंस करिया पड़ियो ना कोन करबा एबे I2U2 कर दियो एथरे की रहला UAE ना UAE तो गोटे मुस्लिम कंट्री तो एबे दैट मींस बैलेंस करूची से ना किछि सेक्शन को आनिले किछि हम एपट आनले किछि सेपट आनले सो दैट USA बैलेंस करूची ना इंडिया आल्सो डूइंग द सेम ना इंडिया प्रति जो भाव अछि जेमते कि पाकिस्तान कथा नै जाओ इंडिया प्रति तांकर खराब भाव है ना तो इंडिया चाहे UAE सहित भलो रिलेशन रखियो सो दैट टू शो द वर्ल्ड
कि देखो पाकिस्तान खराब दैट डज नॉट मीन आमे सब मुस्लिम कंट्री को खराब हबु बा हमर रिलेशन खराब हमर वी आर हैविंग हेल्दी रिलेशन विथ यूएई सेठी हमें आईपीएल मैच करूचे एते सब करूचे इंडिया रो एते भलो रिलेशन अछि यूएई दैट पाकिस्तान इशू अलगा सेटा को आमे गोटे जे मुस्लिम सह कम्युनिटी सह ऐड कर देबा एटा ठीक नो सेटा हमर अलगा बायलैटरल रिलेशन पर ताकू रिलीजन सहित ऐड करो नहीं ये होची इंडिया रो कांसेप्ट इंडिया कह कते ताकू रिलीजन सहित ऐड करो नहीं दैट इज आवर कॉलोनियल पास्ट किंबा हमारे सेपरेशन जो होता ताकू नहीं कि प्रॉब्लम मुस्लिम सहित किसी इशू नहीं हमर सेते इंडिया भी बैलेंस करूची कहूँ देख सेमती जदि होता ताले कौन से मुस्लिम कंट्री सहित हमर भलो रिलेशन न था बट वी आर हैविंग गुड रिलेशन वी आर हैविंग गुड रिलेशन विथ साउदी साउदी सहित भी भलो रिलेशन अछि ता अर्थ रिलीजन इज नॉट एन फैक्टर ये तो गोटे फैक्टर नुह बुझ पार्छ नहीं जहाँ भी हो ये खत्म दैट मीन्स इंडिया भी चाहे देख प्रूफ करने कि वी आर नॉट आम चाहूँ भल रिलेशन बट पाकिस्तान चाहूनी दैट इज अ डिफरेंट थिंग ताकू पाकिस्तान को आम सहित ये मिसेब ना इंडिया कहया कथा दैट मीन्स यू हैव टू शो द मैच्योरिटी और चाइल्ड भाया बिहेव कर ना कौन बुझीपार नहीं तो ये रम देन आउ कौन रमको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इकोनॉमिक कॉरिडोर को बेनिफिट मिल आउ कौन मिल आमको ऑयल मिल साउदी अरब ये सब जदि आम यूएई अच्छी यूएई तो ट्रेड हम है ना ये हमको देखा आउ यूएई तुम जान वन ऑफ द लार्जेस्ट रेमिटेंस फॉरेस्ट रेमिटेंस कौट आस यूएई इंडिया को आसूची देन आम दैट मीन्स वेस्ट एशिया पॉलिसी को बैलेंस कर आउ को काउंटर करवा चाइना को थ्रू दिस वी विल काउंटर द एशिया वेस्ट एशिया पॉलिसी टू काउंटर द चाइना सो दैट आम चाहिए गोटे स्ट्रांग होल्ड बन रखापी आ यूएस र प्रेजेंस अच्छी एंड टू काउंटर द टेररिज्म एज वेल आपको तो आम कहीपर आड कर टेररिज्म को आम कंट्रोल करवा काउंटर करवा है ना प्लस डिफेन्स आम कह रिलेशन बढ़ी क्या सहित इज्राइल सहित कहीं इज्राइल वन ऑफ द हाईएस्ट एंड द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड डिफेन्स प्रोडक्शन ये करे दुनिया रे जानिछ बुझिपार मिसाइल जना जाए वर्ल्ड रे बुझिपार वर्ल्ड क्लास मिसाइल सब बनाती से माने ड्रोन वगैरह जहाँ भी तो दीज आर द बेनिफिट्स इंडिया इज गोइंग टू गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रीजन डिफेन्स कोऑपरेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़िबो है ना और जदि वंस यू आर मेंटेनिंग ए गुड हेल्दी रिलेशन विथ यूएई दैट मीन्स आमर जो अच्छी आमर कौन जो ग्रुपिंग टा अच्छी लेट्स से आम कहबा गल्फ ग्रुपिंग हो फॉर एग्जांपल मु कहबी गल्फ कंट्रीज जो अच्छी से सहित रिलेशन इंप्रूव कर तो यहाँ भी गोटे आम बेनिफिट रहिबो करेक्ट दिस वन एवरीवन